Pollution is a very, very big problem across the world, and governments of almost all the countries are putting huge efforts to curb this pollution. In India, there are so many environmental protection laws, but unfortunately, very few people knows about these environmental protection laws which are present in India. Whether you are a businessman, consultant, teacher, manager, students, or even a simple citizen of India, you should know the environmental protection laws which are present in India. Hello friends, I'm CS Shantanu Pethe, and in today's video, I'm trying to cover the Air Pollution Control Act. I request you to watch this video till end and also share this video with as many people as you can. So let's start the video. And now we are going to cover Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. Before we start with this Air Act, you have to remember that सबसे पहले जो आया था pollution control का measure वो था Water Act की form में, Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. This was the first measure to control the pollution of water. After 7 years of gap, government further realized that there is a air pollution as well, and for that purpose, government enacted Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, and the focus of this act will be on the air pollution. So let's see the object and the purpose of this act. This act provides for prevention, कंट्रोल एंड अबेटमेंट. प्रिवेंशन का मतलब है उसको रोकना, एयर पॉल्यूशन को रोकना. कंट्रोल मींस उसको कंट्रोल में रखना, लिमिट से एक्सीड नहीं होने देना. एंड अबेटमेंट का मतलब होता है कि उसको और कम करना, जो लेवल है उसका पॉल्यूशन का उसको कम करना. तो मेन ऑब्जेक्ट इसका प्रिवेंशन, कंट्रोल, अबेटमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन है. एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड फॉर कैरिंग आउट द अफोरसेड पर्पस. तो एक्ट बनाने के बाद उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एजेंसी का होना जरूरी है. तो यहां पर पावर दी है गवर्नमेंट को कि दे कैन एस्टेब्लिश द बोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंप्लीमेंटिंग दिस एक्ट. Again, now we will see the definitions under this act also. These are also important definitions. बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि क्वेश्चन इन definitions के ऊपर आएगा. The most important definition of this act is the air pollutant itself. अब यहाँ पे ध्यान से देखना, दोनों एग्जाम में आती है. One is air pollutant, that is defined under section 2A, and another is air pollution, which is defined under section 2B. So first we will see the air pollutant. Air pollutant means any solid, liquid or gaseous substance इंक्लूडिंग नॉइज. तो इसको आप मत भूल जाना एग्जाम में, नॉर्मली स्टूडेंट से स्किप कर देते हैं. सो एयर पॉल्यूटेंट मींस दे आर सेइंग सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस इंक्लूडिंग नॉइज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन सच कॉन्सेंट्रेशन. व्हेन दे आर सेइंग कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब वो बात कर रहे हैं डेंसिटी की. सपोज इतना है सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, देयर इज नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर और इंक्रीज हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन इसका इंक्रीज हो जाता है, as may tend to injurious, and because of this density of this solid, liquid, gaseous or noise, there is a injury to human beings, living creature, plants, properties or environment. ये सभी आपको लिखना है. So it means just a mere presence of solid, liquid, gaseous substance or noise is not an air pollutant, but it's its concentration which decides whether it is an air pollutant or not. If it is present in such a concentration which will be injurious to human, living creature, plant, property and environment, then only such will be treated as air pollutant. And now see the connected definition, that is air pollution, which is defined under 2B. Air pollution simply means presence of air pollutant in the atmosphere. So if atmosphere में air pollutant है, then it will be treated as air pollution.
Now let's see the definition of control equipment. Control equipment means any apparatus, device, equipment or system. किसी भी तरह का apparatus हो सकता है, device, equipment या system हो सकता है. To control, नाम ही इसका control equipment है, तो so to control the quality and the manner of emission of air pollutant. तो पहला तो ये कह रहे हैं कि like if there is any factory and factory you know from chimney it emits certain air pollutant in the atmosphere. So the industries are asked to install such apparatus, device, equipment system to control this quality and manner of emission. तो ये जो emission होता है air pollutant का इस factory से, इसको कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल द क्वालिटी एंड मैनर ऑफ दीज एमिशन, कंट्रोल इक्विपमेंट नीड टू बी इंस्टॉल्ड बाय द फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और प्रोसेसेस. एंड नॉट ओनली दिस, इट इंक्लूड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इट इंक्लूड्स एनी डिवाइस यूज्ड फॉर सिक्योरिंग द एफिशिएंट ऑपरेशन. एफिशिएंट ऑपरेशंस के लिए भी अगर कोई आपने डिवाइस लगाई है इंडस्ट्रियल प्लांट में, देन इट विल आल्सो बी ट्रीटेड एज कंट्रोल इक्विपमेंट. एफिशिएंट ऑपरेशन का मतलब है टू रिड्यूस द वेस्टेज, टू रिड्यूस द कॉस्ट. सो इफ एनी इक्विपमेंट you have installed in your factory which is for the efficient operation of industrial plant, then this will also be treated as control equipment. Now we will see the most important question of this act is air pollution control area. Area define कर सकती है state government to for the purpose of control of air pollution. So as per section 19, the state government after consultation with the state board. So who will declare the area? State government. But after consulting the state board, it can declare any area as air pollution control area. तो ये अगर इतनी बड़ी state है, इस state में state government can declare such areas as air pollution control areas, जिसको आप बोल सकते हैं Air Pollution Control Area, APCA. Such area can be added, deleted or altered. तो ये जो एरिया है इसको स्टेट गवर्नमेंट ऐड भी कर सकती है इस एरिया में, और या फिर इसमें से कुछ डिलीट भी कर सकती है, या फिर इसको अल्टर कर सकती है. Now what will happen after declaring such air pollution control area? डिक्लेयर करने के बाद क्या होगा? Now after declaring such area, the state government can prohibit a burning of any material in such area if it is likely to cause the air pollution. तो कोई भी इस एरिया में अगर कोई ऐसा मटेरियल बर्न हो रहा है जिससे एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो ऐसे बर्निंग ऑफ सच मटेरियल को स्टेट गवर्नमेंट बैन कर सकती है. बट रिमेंबर, एनी मटेरियल it can ban other than fuel. So fuel will not be banned by the state government. Now we will see the power of state government to give instructions to the vehicle registration authorities under section 20. As you must be aware, जो cities रहती हैं उसमें सबसे ज्यादा जो pollution होता है, the most polluting elements in the cities are vehicles. तो vehicle से सबसे ज्यादा pollution होता है, and vehicle को जो अथॉरिटी गवर्न करती है वो है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट, दैट इज आरटीओ. आरटीओ इसको गवर्न करता है, आरटीओ. सो हियर द स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू गिव इंस्ट्रक्शन टू सच बॉडीज अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट. स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टिंग द स्टेट बोर्ड may give such instruction to registering authority under motor vehicle act for maintenance of standards for emission of air pollutant. तो जो भी व्हीकल रहते हैं आपके, और ये जो व्हीकल में से जो भी एमिशन होता है, एयर पोल्यूशन जो एमिशन करते हैं, ये इसकी जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो जो स्टैंडर्ड्स फिक्स करेगी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और मोटर व्हीकल अथॉरिटी को ये इंस्ट्रक्ट करेगी कि व्हीकल शुड बी एमिटिंग द एयर पॉल्यूटेंट विद इन द स्टैंडर्ड लिमिट. और इसके लिए आपने देखा होगा पीयूसी की एक रिक्वायरमेंट है, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए पीयूसी लेना पड़ता है व्हीकल्स को. इट इज बिकॉज ऑफ दैट.
एंड सच अथॉरिटी, जब कभी भी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी डायरेक्शंस इंस्ट्रक्शंस देंगी मोटर व्हीकल अथॉरिटीज को, रजिस्टरिंग अथॉरिटीज को, देन सच मोटर व्हीकल रजिस्टरिंग अथॉरिटीज are bound to act on such instructions. Now let's see the provision related to restriction on establishment of industrial plants in the air pollution control area. This is given under section 21. As you are already aware that state government has power to declare any area as a air pollution control area. Now after declaration of this area, if any person want to establish any industry in this area, then such person will have to take the permission of the state board before establishing any industry in such air pollution control area. अब आप पूछेंगे सर ऑलरेडी अगर कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश है उस एरिया में, जब आपने डिक्लेयर किया उसके पहले से अगर कोई इंडस्ट्री है तो उसके लिए क्या? So it says that already if there is any industry operating in that area, air pollution control area, then such existing industries will have to apply for the permission of the state board within 3 months from the date of declaration of that area as air pollution control area. तो जब कभी भी स्टेट गवर्नमेंट किसी एरिया को एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया डिक्लेयर करेगी, उसके 3 महीने के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज है उस एरिया में, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है, उनको 3 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन दे विल हैव टू अप्लाई टू द कंसर्न स्टेट बोर्ड फॉर द कंसेंट टू कंटिन्यू टू ऑपरेट इन दैट एरिया. तो जब कभी भी ऐसी एप्लीकेशन स्टेट बोर्ड के पास आएगी existing industries की, then such state board will give the will grant the consent to such industries to operate. This consent will be given within 4 months from the date of application, but state board can put certain conditions while granting the consent. अब ये कौन सी conditions लगा सकती है state board, ये हम देखेंगे. So while granting the permission to any industry to operate in air pollution control area or continue to operate in air pollution control area, the state board can put following conditions. अब ये conditions state board लगा सकती है. सबसे पहली condition है the industry should install control equipment. Control equipment उनको लगाने पड़ेंगे of specific specification. यानी कोई भी लोकल इक्विपमेंट नहीं लगाना है, स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन का जो स्टेट बोर्ड बताएगा उस तरह के इक्विपमेंट आपको लगाने पड़ेंगे. एंड सच शुड बी अप्रूव्ड बाय द स्टेट बोर्ड. तो ऐसे कंट्रोल इक्विपमेंट जो स्टेट बोर्ड ने अप्रूव किए हुए हैं, स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन के हैं, दैट शुड बी इंस्टॉल्ड एंड ऑपरेटेड इन द प्रीमाइसेस. पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन है जो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है, वॉट एवर एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट आर इंस्टॉल्ड इन द इंडस्ट्री, इट शैल बी रिप्लेस एज पर द डायरेक्शन ऑफ द स्टेट बोर्ड. एंड द थर्ड कंडीशन that all these equipment shall be for all time should be in good running condition. तो इंडस्ट्री को वो इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी इक्विपमेंट है वो हर समय गुड रनिंग कंडीशन में होना चाहिए. And the fourth is chimneys shall be erected as per the approved specification. चिमनी आपको पता होगा जहां से आप एमिट करते हैं, एमिशन एयर का जो भी पॉल्यूटेंट रहता है वो एमिट होता है, दैट इज द चिमनी. ये जो चिमनी रहेगी ये भी एज पर द अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशन जो स्टेट बोर्ड बताएगा उस तरह से आपको चिमनीज को इरेक्ट करना है अपनी इंडस्ट्रीज में. And apart from these general condition, a state board may put some other condition also as may be prescribed while granting the permission or consent. Now let's see the provision of section number 22, which says that a board can restrain persons from causing the air pollution. So suppose any person is operating any industrial plant, then such person is not allowed to emit the air pollutant. जो ये चिमनी में से air pollutant emit होंगे इसके प्लांट में से, he cannot emit such air pollutant in
excess of the standard laid down by the state board। तो जो भी स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं स्टेट बोर्ड ने, स्टेट बोर्ड के जो स्टैंडर्ड है उससे ज्यादा का एयर पोल्यूशन का एमिशन नहीं कर सकता ये पर्सन फ्रॉम दिस प्लांट। और अगर एंड इफ he violate this provision, that is if he emits the air pollutant in excess of the standard prescribed by the state board, then the state board can approach to the court। तो state board क्या कर सकती है, कोर्ट में सूट फाइल कर सकती है अगेंस्ट दिस पर्सन फॉर कॉजिंग द एयर पॉल्यूशन। अब यहां पर आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो यू ऑल्सो हैव टू राइट कि ये जो एयर पोल्यूशन के जो स्टैंडर्ड हैं, स्टैंडर्ड ऑफ एयर पोल्यूशन एक किस यूनिट में फिक्स होते हैं। सो एयर क्वालिटी मेजरमेंट्स आर कॉमनली रिपोर्टेड इन टर्म्स ऑफ माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। ये आपको लिख के ही आना है, यूनिट्स ऑफ मेजरिंग एयर पोल्यूशन, माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, दैट इज इट इज लाइक यू हैव टू राइट लाइक दिस, एंड अ पार्ट पर मिलियन पीपीएम, पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर बिलियन पीपीएम या पीपीबी, ये these are the units of measurements of air pollution। Now there are so many similar provisions which you have already studied under the Water Act, so now I am not going to repeat all those provisions in detail, just मैं आपको short में बता रहा हूँ ये provisions जो similar है Water Act के। तो पहला है इसमें फर्निशिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सेस पॉल्यूशन। तो जो भी पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है किसी प्लांट का जहां से डिस्चार्ज हो रहा है एक्सेस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूटेंट एक्सेस में डिस्चार्ज हो रहा है, सो इन दैट केस सच पर्सन इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट और मिटिगेट द एयर पॉल्यूशन which is caused by discharge or emission and intimate the effect of such discharge to the state board। और state board, जब state board को पता चलेगा ये emission के बारे में, state board will take the remedial measure to prevent and mitigate the air pollution, and if the state board requires, the person in charge or person responsible shall assist the state board for taking the remedial measures। So this point was totally similar as we have already studied in the Water Act। Similarly, we have studied so many powers are given to the state board, so all are similar whatever we have studied under the Water Act, so I am not repeating here। Power of entry and inspection हमने देखा था Water Act में, सेम यहाँ भी है। Power to obtain information देखा था, सेम। Power to take samples of air और emission, एयर एमिशन का यहाँ पर सैंपल ले सकती है, डिफरेंस केवल इतना ही है, वहां पे हमने वाटर के सैंपल देखे थे और यहाँ पर एयर का या एमिशन का जो सैंपल है वो ले सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आ सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर विच द स्टेट बोर्ड हैज गॉट अंडर दिस एक्ट, दैट इज पावर टू इश्यू डायरेक्शंस। इट इज गिवन अंडर सेक्शन 31A, एग्जाम में भी आपको ये कोट करना है। It says that the state board can issue the direction to any person, officer or authority in exercise of its power and function under the act। और ये जो डायरेक्शन हो सकती है बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस हैं, आप देख लीजिए या नोट कर लीजिए। डायरेक्शन में इंक्लूड द फॉलोइंग: क्लोजर, प्रोहिबिशन और रेगुलेशन ऑफ द इंडस्ट्री। इवन क्लोज करने के लिए, उस इंडस्ट्री को क्लोज करने की डायरेक्शंस भी दे सकती है स्टेट बोर्ड। देन नेक्स्ट इज स्टॉपेज और रेगुलेशन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और एनी अदर सर्विसेज। तो कोई भी यहां पर प्लांट है, इफ दिस प्लांट इज वायलेटिंग दिस एक्ट, then state board has got power to issue direction to persons, officer or authority of the government to make sure that this industry will be closed, or there may be stoppage or regulation of supply of water, electricity or other services। तो ये स्टेट बोर्ड दूसरे जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है उनको इस तरह की डायरेक्शन दे सकता है। And on this point itself they ask question in the exam। Now please look at carefully, ये जो पावर है
the power to issue direction is given to the state board and not to the chairman of the state board. इसका मतलब स्टेट बोर्ड एज अ बॉडी कैन इश्यू द पावर. यही एक केस हुआ था इसी पॉइंट पे, सुमा ट्रेडर्स का केस हुआ था, चेयरमैन कर्नाटका स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड का. In this, it was held that only state board could give or issue the aforesaid direction. बहुत ही important directions होती है और board only has the power to issue such direction. The single chairman of the board, the chairman of the board as an individual capacity has no authority to issue such direction. तो independently उस board का chairman individually वो direction issue नहीं कर सकता. These should be issued by the board. Now let's see the provisions of approved laboratory. जो भी pollution रहता है, air pollution, उसको check करने के लिए laboratories की जरूरत रहती है. And here under this act, state government has power to establish the laboratory for checking the quality of air pollution. And state government has also power to appoint government analyst for this laboratory and other persons in this laboratory who are having the prescribed qualification. Now next is the appeal against the order of the board. As we have already seen, the state board has got power to issue the orders, or agar if any person is not satisfied with the order of the state board, then he can move to the appellate authority within 30 days. ये पूरा same provision है as we have already studied in the Water Act. Now let's talk about the penalties which are prescribed under this act. इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है. पहली जो पेनल्टी है वो important जो प्रोविजन है उसका वायलेशन के लिए है. So if any person fails to comply section 21, 22 or 31A, then he will be punishable with a minimum imprisonment of 18 months and maximum 6 years, and he will also be punished with the fine. Now, if the offense is continuing offense, अगर वो offense इस तरह का है कि continuing है, जैसे emit कर रहा है वो कुछ emission excess of standards, तो ये continue कर रहा है उसको emission, तो ऐसे केस में 5,000 per day, this is additional penalty which can be imposed. If the failure continues beyond a period of 1 year, तो 1 साल हो गया है और ये failure जो है ये continue है from the first conviction, पहली बार उसको conviction किया था उसके बाद भी 1 साल हो गया है, continue है, then again he will be sentenced to imprisonment for minimum 2 year. इस बार जो जेल भेजा जाएगा वो कम से कम 2 साल और maximum 7 years तक की उसको सजा हो सकती है. And the fine also be imposed on such person. अब ये section 21, 22, 31 क्या है? 21 restriction on use of certain industrial plants. 22 person carrying on industry not to allow emission of air pollutant in excess of the standard. And section 31A we have seen that power to give direction. इनका अगर violation होता है 3 का तो heavy penalties है. अब बात करते हैं दूसरी पेनल्टीज, जो छोटे छोटे ऑफेंसेस हैं उनके लिए भी पेनल्टी है. सो इफ अ पर्सन कमिट्स द फॉलोइंग ऑफेंस, डैमेजेस एनी वर्क और प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट बोर्ड, ऑब्स्ट्रक्ट एनी पर्सन एक्टिंग एज पर द डायरेक्शन ऑफ द स्टेट बोर्ड, fails to furnish any information, fails to intimate the occurrence of emission of air pollution, or provide any information which is false, then he shall be punishable with a term of maximum 3 months, यानी 3 महीने तक की इसको सजा हो सकती है इन फॉलोइंग केसेस में. एंड इसको फाइन भी पे करना पड़ सकता है. देयर इज और आइदर सजा हो सकती है 3 months की, और इट कैन बी फाइन ऑफ 10,000 और बोथ.